try to understand, Rohan. This question was very important. When you give any interview, if this question is asked and you answer in a way which you already answered, this is the best deadly combination. Understood? So at auto wiring, you rightly said connecting. Object already got created due to at component, and at auto wiring is doing कि प्रोडक्ट रिपोजिटरी लिखी थी आपने, उसके अंदर कौन सी मेथड्स थी और हर मेथड में आप क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत अगर आप रिकॉल कर पाओ। यस सर, आई कर रहा हूं। फ्री में मिल रहा है, वो फ्री में लेने से अच्छा थोड़ा उसमें दिमाग लगाए और चेंज करना पड़ता है। लॉट ऑफ R&D and you was doing online class, right? Yes. One more question: what future scope technically you see in this project, that what you can build more? Correct. What matters is you are aware of it. The hackers which are sitting in between, they can access those variables and also change or modify or delete some. Now they can access through methods. What is the problem? But मुझे चाहिए कि कहीं पे फाइनल स्टैटिक वगैरह वर्ड यूज किए या जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी हो सकता। आपने पुट मैपिंग यूज की होगी, राइट? उसकी जगह अगर मैं ऐड गेट मैपिंग लिखूंगा, क्या मेरा प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा? और उसमें एट्रीब्यूट से हम लोग मैसेज बेसिकली की और वैल्यू में काम करता है, तो की में हम लोग अपना जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू होगा वो दे सकते हैं, एरर मैसेज या कुछ करते हैं, और वैल्यू में हम लोग वो मैसेज जो वहाँ से आ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ भी पूछी मैंने, अपने देखकर ऑब्जर्व करोगे, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने नहीं कुछ तो 50-100 तो क्वेश्चन पूछ ही लिए होते। आज हमारे साथ रोहन है और ये बिहार से आए हुए। इन्होंने हमारे शॉर्ट्स, रील्स, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वीडियो देखा था। उसके बाद इन्होंने किरण एकेडमी में एडमिशन लिया। बिहार से ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, बट अभी जॉब सर्चिंग के उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं कि कहीं पे कुछ अप्लाई किया जाए, प्लेसमेंट मिला जाए। सो हम आज इनसे बात करेंगे। ये गोपाल नारायण कॉलेज से है बिहार में, बहुत अच्छा पढ़ाई किया हुआ है इन्होंने। कोर जावा, एडवांस जावा, एंगुलर भी फिनिश किया है। अभी प्रोजेक्ट्स भी अपने से खुद से बनाए हुए जो इन्होंने मुझे बिहाइंड द सीन बताया अभी। तो हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि इनको कितना आता है, क्या आता है और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बट एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको इनको जज नहीं करना है, आपको खुद को जज करना है मेरे क्वेश्चंस पे। सो वेलकम। ओके, सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधा सीधा मैं कोर जवाब पे आ जाता हूँ। ओके, सो you can answer in English, Hindi or any language. That's not a problem. Okay, language should not be a barrier for this mock interview. Clear? Yes. In core Java, now you know core Java and advanced Java also, right? So yes, what difference you observe, which is important and why, and how advanced Java is using core Java? Can you explain a little bit? Basically core Java is used on top of the advanced Java, and basically the core concepts like if-else loops, conditional loops, and all switch cases, all are used in the advanced Java also. Advanced Java gives the feature of connecting with the database and interacting dynamically with the user and the system. So basically we are working on the core Java only, but we are enhancing with the capabilities of advanced Java with interacting with the database and real-time dynamic data showing to the user. This is the basic difference. Okay, so core Java is just it's the heart of everything. Yeah, it is the and जो एडवांस जावा होता है वो बिल्ट होता है कोर जावा पे ही, और उसके अंदर कोर जावा ही होता है। और कोर जावा। Okay, so my question would be like, you know collection framework? Yes sir. What is difference between collections class and collection interface? A collections class is different from the collection interface, because in interface there are basically three types of more interfaces, like list, interface, maps, and sets. So, and the collections is a class which is used in that class. We have iterators, which is used to iterate through all the collections inside that interface. So this is the basic difference between those two. And basically we used all the classes of the collection interface only in the development of many web applications or any programs we are using right now. Okay, so let me answer this question. Okay, so you answered that correctly, but I need to answer again, so all audience can look into this, like how to answer this question. Okay. Yes. So like collections and collection, both are the concept in the core Java. Collections is a class, whereas collection is the interface having list and set interfaces inside it or inheriting it, and then collection is a class where utility methods are there. Yes. Collections class is helping collection framework to become matured or to access it easily, like sorting method is there, shuffling method is there in the collections class. Okay. And
collection is just like putting elements into it. So collection will be used. But after putting an element, if you want to retry those elements in a more efficient way or more trickily, like greater number you want to access, lesser number you want to access, then collections framework will be used. Okay. Yes, correct. So that's great. So moving to next question. You know hash map? I have not used it. You have not used. Okay, so I'll be coming directly to your project. Which project you developed? Recently, my recent project was Shop Hub. It is a billing software in which the products and categories are added, and we can fill the inventories of that products and then make bill out of it. This is my project. Okay, so which technologies are used in that project? In this project, I have used the Spring Boot, Spring and the MVC framework I have used in that. On top of Hibernate ORM tool I have used, and for front end I have used the Bootstrap. Okay, so from Bootstrap request was going to Spring Boot, and Yes. then processing was done, and then Spring Boot is calling Hibernate, Exactly. right? Yes. How to do connectivity between these two, Spring Boot and Hibernate? Basically, there is a file name as application.properties in which all Very the configurations like your password of the database, username, and URL. Basically, all the configuration things will be written in that. After that, this project is made using the Maven tool. Maven is a project management tool in which there is a pom.xml file. In that pom.xml file, there are all the artifact ID, group ID, and the dependencies and the plugins which are used throughout the project. It is made in that only. And in this Spring Boot, the Spring Initializer, which makes your project very easily, you can just import in Eclipse. It is used, and on top of that, the views. There is a views folder in that, in which all the JST files, basically your front end things, are kept in that only. And from there, the request will be sent to the controllers, and then controller will send the request to service, and then service will access the repository, and then we can retrieve the data or insert the data. And in repository you are using Hibernate code, right? Hibernate code, yes. Okay, great. So he said Maven is used, right? Yes, sir. So let me explain Maven so that audience will get to know your answers and my explanations also. Sure, sir. Yeah. So Maven is a dependency management tool where dependencies are managed, and we'll have a lot of goals in the Maven where like compile, test, clean, all these goals we are executing through Maven, and it's an automated process. Dependencies will be managed very easily. It is downloading from Maven repository and storing into the local repository. Yes, Okay. sir. And whenever you create a project, local repository dependencies will be mapped in the build path. And if it is not exist in the local repository, then it downloads from the remote Central repository. repository, yes. Yeah. So this was not a question about Maven. I didn't ask him, but this is explanation that I wanted to give. Okay. Coming again forward in your project, just like I want to ask, I'm curious about it. Like, how many controllers you wrote for that? I basically made 4 controllers. 4 controllers. Yes, sir. First controller was of category, second was of product, third was inventory, and fourth was bill. In the category controller, all the operations for the category management, like adding category, deleting category, or editing the category, will be written in that. Apart from that, the product controller, same thing, the product management controllers, and then inventory also and bill also. All the management was separated. Like I wanted the separation of concerns for each and every module. So that's why I made 4 controllers. So 4 controllers you made, right? Yes, sir. So might be 4 services, might be 4 repositories, Oh, right? exactly, sir. Okay. So which mappings you have used? I've used the get mapping and post mapping on a high level because basically my work was to get all the details retrieved from the database and put some details in the database like insert or update or delete. These were so for that I've used post mapping. So these are the 2 mappings I've used: get mapping and post mapping. Okay. No put mapping? Put mapping was also used for the update queries. Okay, for updating the data, Yes, right? sir. Great. Did you ever face any issue while developing a project and you realize that it is not getting solved, and but later after researching on ChatGPT, Google, you Yes, sir. solved that problem? Any problem you can recollect or recall? Actually, there was many. So Yeah, so you list out 3. okay. So first of all, I was having problem with the controllers because first of all, I was making the REST APIs for all of them. No front end. Basically, I was sending the request from Postman and seeing if the data was moving efficiently throughout the system. So first of all, when I made the get mapping for home page, so I was not able to retrieve the home page value because the views was not created properly. Inside the views folder, the index was
index.jsp I need to write, but my mapping was not efficiently for the slash, because first of all, when we run the project, it searches for the slash, that is the root repository. So that was not defined, and I was trying to send request, but I was not getting the web page. So this was my first issue. Apart from that, another issue I faced in the insert. When I was inserting and taking data from the form, the model attribute I was not using. I was using the request param annotation. In request param, body. In request the controllers, yes sir. In the controller, I was using request param for each and every attribute. Then I searched in the ChatGPT. There I found that we can use the model attribute. Model attribute, what it does, it binds the data with the entity we are using from the table directly. So we don't need to define each and every attribute for the entity class separately. We just need the model attribute. The form data will come. It will match the name and the entity table name, column name, and it will fetch the data and insert in the database. So this is more efficient. I got to know about it. Okay. And then I faced the same issue I was facing in the delete also. Delete, I was using model attribute. Then I get to know that no, for delete or update, we use the ID. We fetch the ID from the JST page, and then we send that ID to the database for deleting through service, and then we delete it. Great, so great. So try to understand, Rohan. This question was very important. Yes, sir. When you give any interview, if this question is asked and you answer in a way which you already answered, this is the best deadly combination. Yes. Here, interviewer get to know that you have really worked on the project. Understood? Yes. Because these are the real problems. Yes. These problems not brought by someone or artificially. These are the natural problems. Yes. Okay. So let me list out for our audiences also. The first problem was like index.jsp you was not able to map. Yes. Then you use request param because you was doing through REST APIs, Postman, so it was working. But when you did Spring MVC, that time it was not working. Yes. Things were not getting populated, so you did that through model attribute. Yes. Correct? Correct, sir. Then next is like for updating, he was trying model attribute, but that was not the case. Actually, for update or delete, you should be using path variable, right? Yes, sir. And that you got to know after searching, right? Yes. So while searching, you might have learned many more things, right? Yes, sir. Exactly. Because that was not the case that you got directly the answer. So, but you might have searched more. I have faced many errors. I spent actually one and a half hours on the delete code only. Why it is not working? Then after doing many chat GPT searches, YouTube videos, then I got to know how it is done. Why you use Bootstrap? Bootstrap, it is used for making responsive websites, because what does responsive mean? Responsive means your website should open efficiently in each and every device, whatever the size of the device is, and all the buttons or any effects or animations you are using in the development of that front end, it should be working in all the devices throughout it. So for that, Bootstrap is a very efficient tool for it. So but simple code is not responsive, but Bootstrap is responsive. What they might have done? They are using the like JavaScript. They are using very efficiently in that the keyframes attributes are there, which are used for giving dynamic touch to your website. By using HTML or CSS and JS, we cannot write that level of code by manually. So that's why Bootstrap framework comes into picture, and it handles all the animations or effects or anything you want to do dynamic, giving a dynamic touch to your website. So Bootstrap helps a lot in that. It uses the classes which are predefined in that only. So we use that classes. So you used controller, service, and repository, right? Yes, sir. So in services, you might have used at services annotation, correct? Yes, sir. Okay. Now my question is, in service layer, when data is received, in repository layer, you used to put that into database. And in controller, you used to receive that from JSP, right? Yes. Then what you used to do in the service? In service, we write the business logic of so anything you just explain which you wrote. Okay, so basically when we retrieve we want to retrieve products of a particular category, like all the shirts, we want to retrieve the data of the shirts which are available, like Raymond and Manyavar types of shirts are there. So we don't write a separate code for that in the repository layer. We fetch all the categories in the service layer. In that service layer, we filter out all the shirts which are
asked from the category, like category 1 we are asking for. So we sort filter out all the details and then send it to the controller. So all the Why you done that? Any help or any benefit you are getting? We are not populating the repository layer. We are keeping it simple, and all the operations and filtering and sorting type of data are done in the service layer. This basically I said business logic, which are sorting, searching, and filtering out data, all is done in service layer. That's why I did. Great. So service layer basically for logic, and you want to keep repository layer very simple. Yes. So what he said, it's very simple. Repository layer should be very simple. Should be fetching all the categories, but filtering of that category should be done in the service, that is core Java again. Yes. Right? It's a core Java. Exactly. No Hibernate, no Spring. No, nothing. And that should be passed to the controller, and then controller will be displaying that to a JSP. Yes. Correct. That is a business logic that you have used, right? Yes. Anything you remember again that in service layer you have coded something? Yeah, I used the auto wiring of the repository object. I did auto wiring so that I don't need to make the extra object for it to access the repository layer. And also I use the service annotations on the service class. How this @AutoWire works? Does it create an object or it just wire? It basically creates a common object which is accessed throughout the project. Anywhere it creates an object, or it just wire, or it just connect? It just connects with the object only. It does not create separate object for it. Basically, when we auto wire something like service object, whenever we call the service object from anywhere, it will connect with that only, that particular object. No, let's say you explain me. Let's say product service is there. I am auto wiring product repository in product service. Understood? Yes, sir. So when the object will get created? After auto wiring, or before that only object got created? Actually, before only. Whenever the application runs, it searches for all the auto wired objects, and it creates a common instance of that, and all the auto wired objects will access that. Very good. But let me modify the answer. Okay, sir. My question was, auto wiring is connecting or creating an object, or how this process works? And you said very rightly, when application runs, it scans for all the annotations. Yes, sir. But firstly, it scans for @controller, @service, and @repository. And all these annotations have one annotation internally, that is @component. Yes. Understood? And @component says create object. Understood? So objects got created, instances got created, beans got created. Yeah. Now your @AutoWire will be working. Understood? So @AutoWiring, you rightly said connecting. Object already got created due to @component, and @AutoWiring is doing connection. Understood? Yes, sir. So if you don't write @repository, and if you write @AutoWire in the service, then nothing is getting connected. You got my point? Yes, sir. So like that. So you all should be having more clarity on this. But I hope you understood now. Yes, sir. But it's really great that you was able to handle my question, and the people, those who are saying it, you must know this. What is the @bin annotation? You are aware of it? It is same as that of @component. It will also create a object, and you get more control over the methods. Okay. Next is like in repository. I want to ask repository layer. Okay. So can you explain me like for product controller? Okay. Then product service, and then you are coming to product repository. Right? Can you visualize what was there actually in Hibernate? What are the concepts you have used there? Which concepts you used? In context to this? Yes. So in Hibernate, I would say like you use built-in methods, right? Yes. Again, what you used? For database connectivity, we like for accessing the database only, we are using the session factory object. In Spring Boot, we don't make the object of that. We just auto wire. Here also auto wire component is used. But in Hibernate, we used to create a class named as session factory, and we used to call whenever we need to access the database. We will create the object of that class. Then we will fetch the method which is made in the DAO class. And then it is working like that. In Spring Boot, it is very much easier, because here the biggest benefit is auto wiring. In auto wiring, all the components are already created. We just need to access that object and call that particular method. So it becomes easy as compared to Hibernate. That was a very close. तो मेरा क्वेश्चन तो ये था पर अभी भी
कि प्रोडक्ट रिपोजिटरी लिखी थी आपने, yes sir. उसके अंदर कौन सी मेथड्स थी और हर मेथड में आप क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत अगर आप रिकॉल कर पाओ। हाँ, तो उसमें हमने ज़्यादातर एक सेव की मेथड बनाई थी जिससे इंसर्ट हो सके डेटाबेस में। फिर एक अपडेट की मेथड बनाई थी, इसमें अपडेट कुछ फील्ड्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और एक मेथड बनाई थी लिस्ट, जिससे सारे लिस्ट हम लोग फेच कर सकें। बेसिकली 3 मेथड्स मेन थे उसमें जो हमने बनाए। तो मैं बोलता हूँ सेव और अपडेट मेरे को अलग अलग मेथड नहीं लिखनी, एक ही मेथड लिखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें एक मेथड होती है सेशन के पास, जो सेव और अपडेट नाम से मेथड होती है, उसको कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा पहले से MySQL डेटाबेस में तो उसको अपडेट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पहले सेव करेगा, और अगर कुछ अपडेट होगा तो अपडेट कर सकते हैं फिर बाद में। ओके, मतलब मैं समझ गया। तो 3 मेथड की और 2 मेथड बन सकती थी। हाँ, ओके, तो घर में ट्राई करोगे अभी, एक बार ट्राई करके? एग्जैक्टली। सो इट विल बी ऑप्टिमाइजिंग योर कोड। यस क्लियर? देन you might have created database, right? यस। So how that relation between tables you built up? For that, Or can you explain me any 2 tables where you might have done relation and how you did database design? So basically, I created an entity class. In that entity class, I use annotations like @entity, @id, and @generated type. And the strategy was auto increment. I used it. So what Hibernate does, it basically searches for the entities in the project, and automatically when the project is run, it searches for the database which is defined in the application of properties, and in database automatically creates the table which is defined with the @entity annotations. So we don't need to create manually the tables, all the relationship we don't need to manage manually. The Hibernate does automatically for us. Yeah, but my question was, let me explain this answer again. What you said is very correct. Now you try to handle my next question. You said you don't need to create tables. Very right. Automatically tables get created by seeing that @entity, right? Yes, sir. Who is responsible for doing that? Hibernate. Hibernate. By which tag or annotation? @entity. Yeah, that's correct. But in Hibernate configuration, what you need to write? We need to write the mapping of that particular DDL, HVM to DDL. Yes, sir. Right. One tag is there, right? So due to that, it is getting created. Yes. You understood what I'm saying? Yes, sir. In application.properties, you write what? DDL command is there, which is for data Correct. definition. So you got the point. Yes. Now let's say you sold your project to customer. Okay, sir. So by chance any problem comes in the project, then he will be restarting again. Yes. Correct or not? Correct. So what will happen again? Again, new tables will get created, right? Okay. Correct or not? Yes. Old will get deleted. Do you think this is correct way? No, this is not correct. Because he stored his shirts, pants, and everything, and he's enjoying that project. And suddenly some problem comes, and whenever you start a project, again it will get deleted. No, sir. But the DDL which you said about it in the application.properties, it is marked as false only. That's why the new tables will not create every time. Correct. It will create only one time only. And after so that, first time you are saying should be true, and then later it should be false. No, we will define it false only, so that it will create one while time. selling to the customer. Yes. Like that. But when we sell to the customer, first of all, it will be true only. The tables will get created. Then you make it false. Change it. Yes, sir. Okay, great. So you are a fresher, 2024 pass out, right? Yes. So what answer you have given is very, very perfect. But in industry, that won't work in that way. Okay. I have not in that's all correct, and you are handling questions in a very, very nice way. Brilliant. Thank you, sir. Okay, and excellent. I really hats off to your answers. But see, we have experience, so I can explain you better. What happens when you develop a product? That time it's a development mode. Yes. When you sell a product to a customer, it is a production mode. What the point? At the development time or in development mode, you do settlements of your tables, projects, and everything. Correct? So once tables got created, you start working on those tables, right? In development mode, again deleting, again making on and all that stuff. But once your product is freeze, you can get a table script, right? Yes. From database you can export. Yes. That you give to customer. Okay. And customer will create tables. You got my point? Yes. Still project is not given to customer. What you gave till now? Table. That's it. Done first thing. Then you give project and make it false. The DDL. Yes, sir. I got your point. So it will never get created. But at the customer end, you cannot do such time pass, right? They cannot just create or delete, and they don't want to see that @entity or what is there. It's for developers.
Correct. So that is how industry works. Hopefully you got my point, and I hope everybody might also have got this. Hopefully understood, right? Yes, sir. I have got your point. Right. In development mode, you keep creating, or tutorials when you create, blogs you create. That if you want to send to that project, I'm your friend, you want to send to me, then you will make it true. DDL Yes. to HBM, HBM to DDL, right? So that I will also do R&D on that project, right? But to customer, you cannot do that. No. So that is how the things working. Next, my question would be, like how endpoints are defined. Any trick you use for that, or class level endpoints you used in your project? No, sir. I just made controllers only. Yeah. So controller, there you used to write at rest controller, right? Yes, sir. Maybe at controller, correct? So did you give any endpoint there at the top? When we are defining the get mapping or post mapping, we basically write the URL of that particular endpoint. Like slash will be for the root repository, root folder, like index.html. After that, if you want to access the categories, so we will write slash categories, and then the categories page will be given as a response to the controller. And what is the return type of that method in controller? String. It is string. Yes, sir. Okay, so you are returning page name. Yes, I am returning the page name. And how automatically that page get open? How that page is getting discovered? When we are getting to the categories page, we use the in controller only. In the method, we use model. In that model, we set the attributes at the category list and in the double quotes categories. So that when we access that on the JSP page, we use JSTL tags. So that category list will be accessed there also. No, that I understand. How to send data? I am not asking that. How this categories.jsp got opened? Okay. Because you return only categories word, right? Yes, yes. So in Spring, there is a view resolver which fetches all the perfect pages from the views folder. So that resolves the query as the view.jsp. It adds .jsp because in application.properties, we define the prefix and suffix of the all the pages. We write the .jsp with the suffix of the particular page. So whenever we write a string in, we write categories. So it will fetch that prefix at in the project and add that .jsp as a suffix, and overall it will be categories.jsp and the page will open. So view resolver is used there. View resolver. But this is all about Spring MVC, right? Yes. But there is no use of API then. Your project got built up in the Spring MVC, correct or not? Yes, sir. What's the use of this REST API then? Why you learned that? We can access the data. You didn't use REST API controller, right? You use controller. For testing only. After the bootstrap, I changed perfectly. So what he said, he made the project by using REST controller. Yes. All APIs is created, and then it converted to add controller. Add controller, yes. And then started moving, right? Yes, correct. But okay, so can I say that at REST controller and to create an API that will be just for testing? You want to say that? We can say that also because REST APIs are used to give response in JSON format. So can we say that REST API are used for testing and to build a Spring MVC? No. We use it for testing also. You used, yeah, yes. And we can also use it to give APIs to another. We feel like when we build microservices, there the APIs are contacting with the other APIs. So in that, the JSON format data is only sent to the other API. So their REST controller can be used. From one API to another API, you use REST controller. Yes, sir. Communication between APIs. Can you put in your answer Angular word? Angular, I have not experienced in that. Okay, so let me explain you. You are very correct, but these days Spring MVC that you answered is very correctly, but that is not getting much used in the industry. Okay, but what you said is correct. The same concept getting replaced with the REST API and Angular. Understood? Yes, instead of JSTL, JSP, you will be using Angular. Once you understand complete Angular, and I guarantee, I trust like you will understand that very easily. So Angular, understood? So Angular will be replaced by Vue. Okay. And here instead of add controller, you will writing REST controller. Yes. Got my point? So this flow will be there. Okay, na? So at REST controller you can use for building a Spring MVC application also, that you already said. So that is basically the API calls will be done by the Angular Vue. And very perfect. Yes. So this was about your one project. Yes. A lot of questions I asked in your project. Okay. Thank you, sir. And you was able to answer because you have worked on it.
many people, those who are seeing this, they should understand, unless they create a project, they will not be able to answer by seeing videos or by reading books, right or not? Correct, sir. इससे नहीं होगा, बुक पढ़ के चले गए और फिर आंसर दे दूंगा. Okay, can you give me any error which you faced in console, not about mapping or something, that you learned to solve? Yes, sir. Sometimes I was getting the null pointer exception. Huh. Whenever in basically in the repository layer, when I used to fetch the data from the database, I was not returning it properly, because whenever we create automatically the data, the return type will be null only. When we create, in the Eclipse, we use the automatic creation of objects. Like there is a like create a method name in the repository layer. We use that option. Automatically a method is created. In that method, there is a null return type by default. I did not change that. So that was the error I was facing, null pointer exception. So for resolving that, in the console, the whole error is mentioned, in which line you are getting error, what type of error is there. So I read that line and got to know that, yeah, here the null is getting returned. So that's why it is error come. I changed that. You said something about automatically methods are getting created. Yes. What is that? I didn't understand. Automatic method in Eclipse, there is a function whenever you write a method name which is not present into a class. So there is option comes where you click on that option and a method gets created by that name and return type on. And like the return type will be object. मतलब वो by default बनाता है Eclipse, तो object दे देता है, तो null आ जाता है. Object by default value null, return null होता है. तो उसको हमें चेंज करना होता है. जब हम कोड लिख दिया तो उसको return. तो मतलब जो फ्री में मिल रहा है वो फ्री में लेने से अच्छा थोड़ा उसमें दिमाग लगाए और चेंज करना पड़ता है. ग्रेट. मेरा और कुछ बेसिक क्वेश्चन ये है, अब थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पे जाऊँ. अगर सेव मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? सेव मेथड का रिटर्न टाइप बूलियन है. बूलियन. बूलियन है, प्राइमरी की नहीं है. हाइबरनेट की सेव मेथड सोचो. हाइबरनेट की सेव, सर हम रिटर्न टाइप कोई दिक्कत नहीं है, इसका इतना यूसेज नहीं होता है. बट जस्ट इफ आई आस्क यू टेक्निकलिटी ऑफ इट, तो दोनों बैलेंस करके चलना है. आपका इतना अच्छा नॉलेज है अभी प्रोजेक्ट्स में ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पढ़ लीजिए. यस सर. मैं ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको. सेव और अपडेट का रिटर्न टाइप, नो प्रॉब्लम. गेट का रिटर्न टाइप, गेट का एक ऑब्जेक्ट होता है सर. लोड का, लोड का वो भी ऑब्जेक्ट ही देता है, लेकिन कभी कभी अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन देता है. ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड. ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, सॉरी. वेरी परफेक्ट. देखो आ रहा है ना, तो ये भी थोड़ा नॉलेज रखना है और आपको आता है. यस, करेक्ट ना. तो कोई छोटी सी भी चीज ना छोड़े. क्लियर? यस सर, इस पे काम करूंगा ना. कोई दिक्कत नहीं है. पर आपने क्या 3 क्वेश्चन पूछे, उसमें 2 तो आंसर दे ही दिए. मींस यू आर बियॉन्ड 50%. सो डोंट वरी अबाउट इट. बट छोटी मोटी चीजें कर लिए तो अच्छी बात है. इन pom.xml, which are the dependencies you used? In pom.xml, I used the MySQL connector dependency, Hibernate, and Spring, and Spring MVC. Spring and Spring MVC. These were the dependencies which were created automatically by the Spring initializer, which we create project on Spring. But in Spring initializer also you are mentioning, na? Where there we used to create like Spring web tools, and Spring MVC also we write at that dependency, apart from MySQL and Hibernate, and also JSTL. Okay. Don't you use Tomcat? There is an embedded server in Spring Boot, so that we don't need to install any other server. Any dependency for JSP compilation? JSP compilation. Tomcat dependency, did you add? No. We use the web tools only. Okay. DevTools, you know DevTools? Yes, sir, DevTools. What is that? In DevTools, all the development related dependencies are added for Spring. Okay, so you did create your project through Spring initializer, you are saying, right? Yes, sir. Okay, so you know unit testing? I have heard about it, but I have no idea about it. You don't know, or you don't have any idea about it, right? Okay, now let me ask you about Postman. Okay, so in Postman there are types like GET, POST and all. Correct? Yes, sir, correct. So if you send successful response, if you get successful response, which error code it will be returning? 202. 202 or 200? No, sir, 202 OK message is returned. It's a 200.
200. Okay. And any other error codes you know which you might have faced? One more is For 404. success 200. Okay, remember. 404. It is a not found page not found error. Whenever a page is not present in the server, then it is giving that. And if mapping is incorrect, then Incorrect. Yes, sir. Then also. okay. And one more error is 500 internal server error. Like logic error is there or something we need to debug. So that time 500 internal server error is coming. What you have done in JSTL in JSP page? Can you explain? In JSTL, we import the JSTL tag. There is a tag which we need to use, and a prefix is made, basically a variable to access the JSTL tags. And using that variable, there are different types of tags like if else and for each tags are used to iterate through the loops which are coming from the controller and accessing all the data. And if if is also there, if else. What is the C? C is colon a if. C is a variable name which is used for the accessing the JSTL tags operators and Perfect, methods. perfect. Which is a core. Yes, sir, core. We can define it another variable also. We don't. It is not necessary. We need to write C only. We can use any other variable also. These are for us. Very perfect, very perfect. I think you have done a lot of R&D. Yes. And you was doing online class, right? Yes, of course. Okay. So see, guys, he was doing online class. So he is utilizing his time properly. I don't need to ask him how much time you study or something. Even if you study for 15 minutes, I'm okay with it. Because I think you did practice. 5-5 घंटे बैठे हो कभी? हाँ सर, कोड करने में 8-8 घंटे भी बैठे हैं। हाँ, तो 8 पता चल जाता है बैठे हुए करके, बैठना पड़ता है। तो आप बिहार में थे, अभी आए हो ना? कल परसों आए ना? कल ही आए। कल ही आए। तो वहाँ पे आपने समय का इस्तेमाल किया। यस। बहुत अच्छा, मेरे लिए तो आप एग्जाम्पल और बाकी लोगों के लिए भी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपसे मेरे को समझ में आ रहा है। लाइव एग्जाम्पल आपके आगे है कि मैं ऑनलाइन पढ़ा तो नहीं समझ आता है, ऑफलाइन पढ़ा तो ज्यादा समझ आता है। देखो भाई, समझ वमझ का कुछ नहीं है, मुझे समझना है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट सर। मतलब मैं तो सीधा बोलता हूँ कि सोए वाले को मैं उठा सकता हूँ, पर तुम सोने का नाटक करो तो उठा सकूंगा क्या? उठेगा ही नहीं वो। तो अब तुमको देखना है भाई कि सोने वाला बनना है कि सोने का नाटक करने वाला बनना है। बहुत सिंपल है गाइस, अंदर घुसना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखो कितना एक सी मैंने पूछा तो उन्होंने वो भी बताया कि ये प्रीफिक्स है किसी टैग का, सी की जगह कुछ और रह सकता है। So all these things are needed. Coming back to your project again. Yes. Okay. तो जो डेटाबेस था, करेक्ट, उसमें डायलेक्ट यूज किया था आपने? हाँ सर, डायलेक्ट हमें यूज करना। डायलेक्ट किस लिए होता है? डायलेक्ट होता है जैसे हाइबरनेट जो है एसक्यूएल क्वेरीज को समझता है, वो एसक्यूएल क्वेरीज को नहीं जानता है, तो उसको एसक्यूएल क्वेरीज समझाने के लिए एक डायलेक्ट होता है माईएसक्यूएल का, उसको यूज करना पड़ता है। सिर्फ माईएसक्यूएल के लिए नहीं, हमें अगर कुछ और डेटाबेस यूज करना है, जैसे हमें मोंगोडीबी यूज करना है तो मोंगोडीबी का डायलेक्ट यूज करेंगे। और डायलेक्ट जो होता है ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर जो होता है ड्राइवर भी उसी का यूज करेंगे हम। जैसे माईएसक्यूएल हम यूज कर रहे हैं तो मैंने माईएसक्यूएल का ड्राइवर उसका डायलेक्ट यूज किया। अगर हम मोंगोडीबी यूज करेंगे तो मोंगोडीबी का ड्राइवर और डायलेक्ट यूज करेंगे। तो बेसिकली कन्वर्जन होता है एचक्यूएल क्वेरी जो हम लोग, क्योंकि ज्यादातर क्वेरी लिखते नहीं हम हाइबरनेट, तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा माईएसक्यूएल क्वेरी के साथ में, तो वो कन्वर्जन करता है क्वेरीज का। ये काम होता है, ये डायलेक्ट में होता है, ऐसा बोल रहे हो? ओके, एक स्ट्रेटेजी आपने वर्ड यूज किया एट एंटिटी में, राइट? हाइबरनेट में हाँ, जनरेटेड टाइप वैल्यू जो होता है वो बेसिकली यूज होता है। जो हम लोग एक प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, तो प्राइमरी की का रूल होता है कि वो डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए हमेशा। तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिलते हैं, जिसमें एक होता है आईडी, आइडेंटिटी और ऑटो। ऑटो में क्या होता है, हम लोग वो जो प्रीवियस आईडी होगा उससे एक इंक्रीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इंटीजर वैल्यूज के लिए काम आएगा, इंक्रीमेंट करके, ताकि वो अलग रहे। फेच करते टाइम ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट प्राइमरी की मिल जाए और वो एरर होता है। और डेटाबेस का रूल है कि वो प्राइमरी की हमेशा सेम नहीं रह सकता है, अलग ही होना चाहिए ताकि फेच करने में आसानी हो। इनर जॉइन और आउटर जॉइन, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन दैट टू? इनर जॉइन सर बेसिकली दो टेबल्स को लेफ्ट साइड से जॉइन करते हैं, जो इसका प्राइमरी की और इसका जो भी डेटा हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं उसको एक साथ जॉइन कर देते हैं। और आउटर जॉइन में मतलब दूसरा जो टेबल है उसका प्राइमरी की लिया जाता है और इसका जो भी डेटा लेना है हमें उसको यूज किया जाता है। तो ये जॉइन, तो इसमें कभी भी आउटर जॉइन व्हेनेवर इट इज बीन आस्क्ड, यू शुड बी यूजिंग वर्ड कॉल्ड ऑप्शनल। इफ data, even if it is not matching between two columns, still it will be returning whole row. Yes. That is in the outer join. But inner join, it is must to match the data. Yes.
between the two keys. Okay, like product and category is there. Product ID and category ID must match. Can I Okay. say something? Uh, okay, you want me to explain again? No, I just want to say that instead of join, I have used the relationships. There are many types of relationships. Uh, There are like one to many, one to one. yeah, internal that is also doing a join only. Yeah. So explain me which. Can you explain me from your project which mapping you have used? In my project, I have used the one to many relationship between categories and products. Okay. Like one category has many products, and like that only one product has many bills. Like shirts can have many bills. Oh, so category, products, and then bills. Bills. One category can have multiple products, Products. and one product can have multiple Multiple bills. bills, yes. Okay, go ahead. And for that also I have used the one to many relationships in from category to product and product to bills. So whenever a product is being purchased, the particular bill will get connected to the product entity, so that whenever we want to see like how many this shirt has been sold in a particular month, we just need to access the product entity, and from that entity only we can access the bills also, how many bills are present in the database. It becomes easy to access. So let's say category, then product, and then bills. So in bills table, correct? There were columns related to bill. Now I want to know, was there any foreign key? Yes, sir. Foreign key was there. The foreign key is same as the primary key of the product table. That's why it is matching with that. And in category, there will be no foreign key, right? Because No, it's a in root category table. there is no foreign key. Okay, so one to many you have used. Yes. Did you ever got chance to use many to many? No, sir. I have not used many to many, but I know the concept of it. Like we can use it in many products and many inventory. We can use many products have many types of inventories, because every time every month the inventory gets updated. There are many inventories also, and many products also get created in the database. Okay, so this project was get created. I have asked a lot of questions on your project. One more question: what future scope technically you see in this project? That what you can build more? Yes, there are many future scopes. I have thought about making a analysis report of all the products being sold in a particular month. Like customer want to see how many products I have sold this month. It will show in a bar graph or pie chart. Like what was my profits, what were my sales in the particular. And also I think, I don't know it will be possible or not, I want to use AI. Like in which month the sales is getting higher, in which month the inventory gets stocked very low. Like he will get more insights about that. Basically insights I want to implement in this project. Okay, so basically reporting. Yes, sir. Reports. So you will be using some more dependencies and more tools to get through the insights, right? I have even tried for one thing like code scanning. Whenever a product gets added, a QR code will be generated, and after that QR code is scanned, all the product details will be shown on the. So is it implemented or you are just thinking of it? No, I have implemented into a separate project. I made a like API I have made. Okay, so POC you made, that is proof of concept. It is called a POC. Then you will be putting that into this project. This project, yes. But it is working there? It is working there. The QR codes are generated. All the. Then through mobile you scan them? Yes, mobile only I scan. I don't have that scanner, so okay. I use mobile only. So was it opening something? Yes, sir. All the details are being fetched. What you have used for that QR code generation? A QR code generation dependency is used as Google. In Spring Boot? In Spring Boot only, the pom.xml file is there. In that we use the Zzing. Zzing is the name of the dependency which is used for QR code scanning. We use that. It is provided by Google. So we use that dependency, and the classes are automatically given by the Google only. We can search on the internet, ChatGPT. And there I have seen all the classes. Basically, when a product object is given to the class, it fetches the object, creates a QR code out of it, and saves the QR code into the target folder of the project. And when we want to fetch the data, we just scan that QR code. We will see the QR code, convert it into text, and it will show the data to us. Okay, and then you will be putting that now into this project, right? Yes, sir. Okay, so this is about one project. Again and again, I'm saying that I have asked a lot of questions, but I have many questions more. Okay. I am ready. Yeah, so let me ask you more questions then. Okay. You're interested in that? Yes, sir, of course. Can you tell me where you have used 𝐀𝐝𝐝𝐢𝐭𝐢𝐴 in this? Like 4 parameters are there: inheritance, encapsulation, abstraction, and polymorphism. Can you explain me one by one, like where you have used this in this project?
Let's start with the inheritance. Inheritance. Anywhere you see that you use extends keyword or any interface you have used. I didn't use manually extend keyword, but the like Spring Boot application, that annotation we are using, it internally extends more annotations in that one. So inheritance comes there in picture, and Can you give me that animation names? Which annotations? @component Very good. and @beans. This type. Okay, of no problem. annotation. That auto config and all. Yes, auto Component scan will be there. Yes, sir. Yeah. Next And, is like this is inheritance. Yes. I want to know if you have used polymorphism. Polymorphism I have used. Yes, sir. The very simple it is example. The plus operator which we are using, it is overridden as to concatenate two strings, and it is also used to add two integer type. So you have used that in your project somewhere? Yes, sir. Whenever I am calculating the bill total amounts, then I'm calculating the discounts. So there I'm adding the discount value with the total value, and then making the final amount. So there I've used the plus operator as adding two float variables. But when I also create a invoice ID also. I'm creating it using the ID of that particular class. I'm fetching the last ID and making a string like INV and concatenating with the ID, so that every time the invoice ID is unique to the particular table. So there the overloading concept comes into picture. Very small it is. No, but it is very perfect and very informative, and really I'm impressed with that. That you recollect the example actually. It is really polymorphism. Okay, the plus operator is overloaded actually. Sometimes it is concatenating as string, sometimes it is concatenating as integers. Yes, sir. That's very perfect example. So inheritance, you said annotations are extended internally, but you have not used. That's not a problem. See, using not using doesn't matter. Correct. What matters is you are aware of it. Yes. Now one AC, if you look at, there are 100 features. Yes, we don't use all of them. And it's not needed also, na? Unnecessarily you will not use all the features which are not required in your daily life. Correct. But you should be aware of if tomorrow there is a need of it. Correct? We can use that, yes. You should be using that. So like that Java has 100 tons of features. Okay, so it's not necessary that you will be using everything. So that was polymorphism, that was inheritance. Encapsulation. Encapsulation, the entity classes I'm making, I am binding the data, all the attributes and the setter and getter methods, and also the two-string methods. All the methods and attributes are encapsulated into a class. So their encapsulation comes into the picture. So you made variables as a private? Yes, sir. Why? So that it cannot be accessed through outside of that class. Only the methods will be used to access them. What is the problem if you ask people to access those outside? What is going to happen? Anyone can access it, and so what is the problem? Let them access. They can modify it. The hackers which are sitting in between, they can access those variables and also change or modify or delete some data. Now they can access through methods. What is the problem? But you are restricting to the variables, right? Yes. But you are giving public methods. Public get product ID, right? People will call that and get the product ID. What is the problem? They need to create an object of that. So to access those methods also. Even for variables, they need to create an object. But what I'm trying to say is that the variables are private. So to access those variables, you need to call the methods. And for calling those methods, you need to create an object. But if you made a variables as a public, right? They need to create an object, right? Yes, then what's the use? Why you did all this stuff, that creating variable private, then accessing through getters and setters? It is basically for safety only, sir. Yeah, but what safety? Yeah, go ahead, try. Yeah, should I tell you? Yes. Yeah. So you have given very correct answer about the encapsulation. First of all, that was really cool and good. See what happens when variables are private. You cannot access them directly. What does not directly means? They should be calling through a method. They are getting through methods. Still they are getting variables. My question was, still they are getting variables. Then what's the use? Right? You should say, in getter, you can write some extra lines. Yes. If IP address is this, then only allow. Yes. If username starts with Rohan, then don't give. If username starts with Kiran, then give. So validations you can put in getter and setters. Yes, whereas if you give variables directly, will you be able to stop someone? No. You cannot write if else over there.
I hope that Yes, sir, clears I the got picture, your right? point. Yes. So encapsulation you said, and that was very right. Which feature will remain? Abstraction. Abstraction is basically hiding the implementation of those methods which are written That's all from the correct. user. Hmm. So here all the classes, the features are hidden only. The user cannot see all the methods defined into that. For example, the session factory class object, we cannot see Session that factory is a class or interface? it is a class. Mhm. And inside that class, what methods are there, how it is written, we cannot see that. So that is a example of abstraction, I think so. You have not used this, I've used the session factory. I've used it with autowired and but you never created any interface in this project. In this project, I have not created, but Okay, I should. not created abstract class also. No. But you should. You are saying. Yes, sir. Means- We should use, because all the methods which we are making in the service class, those methods should be made into another interface. From that interface, we need to implement those into the service class. This Perfect. Is the So that would be the abstraction. That yes, would sir, be proper. This is the proper procedure. And then you will be auto wiring implementation or interface in the controller. I didn't get your question. Right now you are auto wiring a service layer, right? Yes. So if you create an interface of service layer, correct? So two classes will be there, one interface and one class. Yes or no? Yes, sir. So out of which these two will get auto wired in controller. We'll auto-wire the service class only. ओके तो क्या होगा, एक इंटरफेस आप बनाओगे और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन बनाओगे, राइट? Yes, sir. तो हम सर्विस जो इंटरफेस है उसको ऑटो वायर कर देंगे, Okay. इसमें कंट्रोलर, तो आपका एब्स्ट्रैक्शन भी यूज हो जाएगा. बट नेवरदलेस इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी यूजिंग ऑलवेज, बट यू हैव दैट नॉलेज दैट मैं बनाऊंगा. इससे मुझे दिखता है कि हाँ भाई इसको पता है. क्लियर ना? थोड़ा और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और खींचूं और पूछूं, तो मुझे ये चाहिए इसमें कि आपने कहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर तो आपने यूज किए होंगे, राइट? Yes. बट मुझे चाहिए कि कहीं पे फाइनल स्टैटिक वगैरह वर्ड यूज किए या जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी हो सकता है. Final to नहीं. नो प्रॉब्लम, बट मेनी पीपल यूज दैट फॉर क्रिएटिंग एन कॉन्स्टेंट्स. हाँ, yes, sir. We use that for constants on final. तो आपने यूज किया है प्रोजेक्ट में? नहीं सर, नहीं, हमने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग यूज करते हैं, पता होना चाहिए, नो प्रॉब्लम. देन कमिंग टू, अगर मैं कोर जावा में एक्सेप्शन कंसेप्ट को यूज किया इस प्रोजेक्ट में? हाँ सर, एक्सेप्शन यूज किया हमने. जो रिपोजिटरी क्लास हमने बनाया है उसमें जो मेथड्स यूज किए हैं, उसमें जितना भी सेशन बनने से लेकर सेशन क्लोज होने तक वो सारा कोड हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है. तो ये एक्सेप्शन का कंसेप्ट यूज कर दिया. यस सर. कोई कभी खुद का एक्सेप्शन बनाया हुआ है? हाँ, खुद का भी एक्सेप्शन हमने कोर जावा में बनाया था. कोर जावा जब पढ़ रहे थे. नहीं, अभी प्रोजेक्ट की बातें हम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में नहीं बनाया प्रोजेक्ट पर पता है आपको. यस सर. कैसे बनाते हैं खुद का एक्सेप्शन? वी यूज द थ्रो कीवर्ड. थ्रो कीवर्ड से हम लोग एक एक्सेप्शन, मतलब हमें पहले तो एक क्लास बनाना पड़ेगा जो एक्सटेंड करेगा एक्सेप्शन क्लास को, और उसके अंदर हम लोग मेथड लिख सकते हैं जो भी हमें एक्सेप्शन के थ्रो करने के टाइम पे थ्रो करना होगा वो. और फिर हम दूसरे क्लास में जहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, वहाँ पे थ्रो कीवर्ड से हम अपने क्लास का नाम लिख सकते हैं. एक ऑब्जेक्ट बनाकर थ्रो न्यू, फॉर एग्जांपल माय एक्सेप्शन, दिस क्लास वी कैन थ्रो दैट मेथड एंड द एक्सेप्शन विल बी कॉल्ड लाइक दैट. तो आपने पर कोई बनाया नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं बनाया. ओके, तो उप्स भी यूज किया आपने, एक्सेप्शन भी यूज किया, फाइनल स्टैटिक का भी यूज नहीं किया बोल रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया, मेथड ओवरराइड की कोई? मेथड ओवरराइड तो नहीं किया सर. टू स्ट्रिंग मेथड यूज की? हाँ, टू स्ट्रिंग मेथड, हाँ उसको ओवरराइड कह सकते हैं हम. किस क्लास से ओवरराइड होती है वो टू स्ट्रिंग मेथड होती है ऑब्जेक्ट क्लास में, और वो बाय डिफॉल्ट सारे क्लासेस में ओवरराइडन होती है या हम करते हैं? जो मैनुअली हम बनाते हैं उसमें टू स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन नहीं किया तो एरर आ जाएगा? एरर नहीं आएगा सर. फिर क्या होगा? टू स्ट्रिंग मेथड हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं ताकि क्लास का सारा डिटेल्स हमें मिल सके इन स्ट्रिंग फॉर्म में. तो वो मेथड ओवरराइडिंग हो गई? हाँ, मेथड ओवरराइडिंग हुई. ये जावा का कौन सा कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग मतलब? पॉलीमॉर्फिज्म. तो मतलब ये भी आपने यूज किया कर लिया है. और कोई मेथड आपको याद आ रही है जो यूज की हो? एक सर, मैंने जब अपडेट का कोड लिख रहा था उस टाइम मैंने पुट और पैच दोनों यूज किया था, लेकिन रखा मैंने पुट को. पैच क्या होता है? पैच होता है जब हम सर पैच मैपिंग, राइट? पैच मैपिंग, यस सर. पुट और पैच में बेसिक डिफरेंस यही है कि पुट से हम पूरा ऑब्जेक्ट को ही अपडेट कर सकते हैं, उसमें सारे फील्ड से आ जाएंगे.
और पैच पैच से क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक आईडी, मान लीजिए कि हमें नेम चेंज करना है तो सिर्फ नेम ही पैरामीटर में भेजेंगे और नेम ही अपडेट होगा, बाकी तो सारे पुट से भी होता है वो तो। पुट से भी होता है, लेकिन आपको पूरा ऑब्जेक्ट भेजना होता है उसमें। अब समझ लीजिए, मैं यू आर वेरी करेक्ट, ये तो एक नाम है, और पैच दूर से देखो तो पैच से पता चल जाता है कि पैच लगा रहे हो आप, जैसे पैंट फट जाता है तो रफू लगाते हो, काइंड ऑफ, ओके ना। जैसे गेट है, दूर से पता चल जाता है कि भाई तुम कोई डेटा ले रहे हो। एक चीज मुझे बताइए, आपने पुट मैपिंग यूज की होगी, राइट? उसकी जगह अगर मैं एड गेट मैपिंग लिखूंगा, क्या मेरा प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा? तो उसी मतलब आपने अगर गेट मैपिंग यूज किया उसकी जगह, तो आपको गेट का ही कॉल भेजना होगा पोस्टमैन से, या फिर जहां से भी आप डेटा भेज रहे हैं। अगर नहीं, वो तो भेजना होगा, हाँ, आई एग्री, बट अंदर का लॉजिक चेंज ही नहीं किया, अंदर का लॉजिक अपडेट का लिखा है, तो चलता है? ऐसा नहीं चलता है। चलेगा। चलेगा। यस सर। फिर तो ये तो बस एक दिखा हुआ है, गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग, राइट? देखो, आपने लिखा एट पोस्ट मैपिंग और अंदर आपने सिलेक्ट क्वेरी लिखी, हो सकता है कि नहीं ऐसे? कर सकते हैं सर, पॉसिबल तो है। पर स्टैंडर्ड क्या है? पोस्ट मैपिंग से पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट ही होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड बट अंदर हम लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, कोड तो लिख सकते हैं। ओके, सो दैट वाज आल्सो ग्रेट। इस प्रोजेक्ट में कहीं पे वैलिडेशंस यूज किए गए? वैलिडेशन सर, हाँ, ये जब अपडेट हम लोग कोड लिख रहे हैं तो उसमें जो आईडी है अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर, उसमें के मैसेज आएगा कि आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पे आएगा? यूआई पे आएगा कि कंसोल पे आएगा? ये हम यूआई पे भी भेज सकते हैं, जो हम लोग जहाँ पे कंट्रोलर के पास वो एक स्ट्रिंग जाएगा जिसमें मॉडल एट्रीब्यूट से हम एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं, और वहाँ पे JSTL मॉडल एट्रीब्यूट से या मॉडल से? मॉडल से। मॉडल एट्रीब्यूट तो सर हम जब फॉर्म से डेटा लेते हैं तो उस टाइम यूज करते हैं। अब जेएसपी से हमें, सॉरी, कंट्रोलर से हमें जेएसपी पे डेटा भेजना है तो उस टाइम मॉडल एक होता है क्लास, उसको यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और उसमें एट्रीब्यूट से हम लोग मैसेज, बेसिकली लोग की और वैल्यू में काम करता है, तो की में हम लोग अपना जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू होगा वो दे सकते हैं, एरर मैसेज या कुछ भी करके, और वैल्यू में हम लोग वो मैसेज जो वहाँ से आ रहा है कि और कोई वैलिडेशन जो जावास्क्रिप्ट का कोई लगाया है? जावास्क्रिप्ट HTML5 का? हाँ, ये जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब मान लीजिए फ़ोन नंबर डालना है तो उसमें सिर्फ डिजिट से आए, तो वहाँ पर टेक्स्ट में हमने नंबर लिखा हुआ है। ओके, इनपुट टाइप नंबर लिखा था। नंबर लिखा है तो उसमें करेक्ट करेक्ट। ईमेल के लिए ऐसा कुछ किया था? ईमेल के लिए ऐसा कुछ तो नहीं किया था, बस बट हमने चैट जीपीटी से यूज़ किया, उसने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के दिया जिसमें सारे वैलिडेशन चेक करा, वो @ है कि नहीं, gmail.com है कि नहीं, स्पेशल। तो जावास्क्रिप्ट अपने आप कैसे कॉल होगी जब सबमिट बटन आपने दबाया? वो सर एक जो हमने फंक्शन लिखा है ना जावास्क्रिप्ट में, वो फंक्शन को ऑन चेंज इवेंट पर कॉल कर रहा है, इवेंट होता है। ओके, तो HTML में बूटस्ट्रैप का जो HTML था वहां पे आपने ऑन चेंज लिखा, ऑन चेंज और ऑन क्लिक, ऑन चेंज। ओके, तो वहां से ईमेल को कॉल हो Validate गया। किया और उसने। तो एरर्स इनलाइन थे कि कैसे थे? वहां पर सर एरर जो है कंसोल पे प्रिंट हो जाते हैं, जो बूटस्ट्रैप पे हमने जावास्क्रिप्ट का लिखा था। कंसोल पे देख के क्या फायदा यूजर के लिए? यूजर कंसोल को पे तो भी पेज पे मतलब चाहिए। वो मतलब सबमिट भी नहीं होगा ना, हमने ये वैलिडेशन पूरा लगाया था कि अगर जब तक वो पर वैलिडेशन, यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये ईमेल आईडी सही नहीं है? जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा कि अलर्ट मैसेज आ रहा था कि यू नीड टू फिल ऑल द करेक्ट डिटेल्स, और जो जहाँ पर मान लीजिए फोन नंबर है वहाँ पे हमने कुछ वर्ड डाल दिया, कैरेक्टर डाल दिया, तो एक छोटा सा मैसेज हाईलाइट हो रहा था कि यू नीड टू एंटर ओनली द नंबर्स, डिजिट्स, लाइक दैट। ओके, तो मेरा अभी कहना है कि ये प्रोजेक्ट बन गया, राइट? तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, करेक्ट है या नहीं है? यस सर। तो आप मेन क्लास को रन कर रहे थे इसमें? हाँ, मेन क्लास को रन कर हाँ। रहे थे स्प्रिंग बूट का। तो क्या इंटरनली हो रहा था? मेन क्लास को रन किया तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गए, ऑटो वायरिंग हो गई, सब हो गया, फिर आप यूज कर रहे हो, राइट? यस तो सर। ये जो अंदर का फ्लो है, क्या उसकी जार वार बन रही थी कुछ? हाँ सर, जार फाइल बनती है मैवन में। जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो दो तरह का फाइल्स बनता है, या तो हम जार बना सकते हैं या तो वार बना सकते हैं। जार जो होता है जावा आर्काइव फाइल होता है, और वार होता है वेब आर्काइव फाइल। दोनों ही वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में ही काम आते हैं। तो और जब हमने प्रोजेक्ट रन कर दिया, कंपाइल हो गया, तो वही जार फाइल डिप्लॉय होता है सर्वर पे और वही रन करता है। कौन से फोल्डर में? ये टारगेट फोल्डर में होता है। टारगेट फोल्डर में बस। करेक्ट है, करेक्ट है। तो जब मेवन के गोल्स कौन से पता आपको? मैवन्स के गोल्स एज इन ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, मैवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो गोल्स मतलब जैसे कंपाइल होता है, इंस्टॉल होता है, क्लीन होता है ना? तो ये नहीं पता? पूरा आइडिया नहीं है सर, कंपाइल Okay. करते हैं लेकिन आइडिया नहीं कि कैसे काम करता वेरी है। गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टारगेट फोल्डर है, ये कहाँ पे जाके स्टोर होता है? अपनी हार्ड डिस्क में कहाँ पे?
हार्ड डिस्क में जो प्रोजेक्ट का वर्क स्पेस होगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक होता है एसआरसी फोल्डर होता है और एक टारगेट फोल्डर होता है। ये दोनों फोल्डर जो होते हैं मेन के अंदर होते हैं, उसके अंदर ये स्टोर होता है। टारगेट मेन के अंदर होता है? टारगेट, हाँ सर, मेन के अंदर होता है। ओके। उसके एसआरसी में कौन से फोल्डर होते हैं? एसआरसी में हमारे जितने भी पैकेजेस हमने बनाए वो सब होते हैं, जैसे एंटिटी पैकेज। एसआरसी में मेन होता है, मेन में जावा। सॉरी, अब हम्म। एसआरसी में मेन होता है। मेन के अंदर सारे जो भी पैकेजेस हमने बनाए, मान लीजिए हमने पैकेज का नाम लिखा है com.tk.entity, तो कॉम फोल्डर के अंदर tk फोल्डर होगा, वो फोल्डर के अंदर एंटिटी फोल्डर होगा, और उस फोल्डर के अंदर हमारे com.tk क्यों लिखा आपने? ये सर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जब भी हम कमर्शियल वेबसाइट्स बनाते हैं तो कमर्शियल वेबसाइट्स जो होते हैं कॉम से शुरू होते हैं पैकेजेस। यहाँ पे आपने द किरण एकेडमी यूज कर लिया? ये सर किरण एकेडमी यूज कर लिया। हाँ, बट ये कंपनी का नाम लिखते हैं बाद में। हाँ, वहाँ पे कंपनी तो कहाँ पे लिखा आपने? एसआरसी में मेन होता है, मेन में जावा और टेस्ट होता है, हाँ, तो दोनों में से कहाँ लिखा? ये पैकेज सर जावा के अंदर लिखा सर। जावा और टेस्ट फोल्डर खाली था? टेस्ट फोल्डर अभी खाली था सर। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल कहाँ थी? एप्लीकेशन वो रूट डायरेक्टरी में थे सर। रूट कौन सा? प्रोजेक्ट का रूट? यस सर, प्रोजेक्ट। याद करो थोड़ा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। रिसोर्सेस टाइप का कुछ फोल्डर था? हाँ, रिसोर्सेज था सर। यस। रिसोर्सेस में कौन सी फाइल थी? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ओके, वेरी गुड। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज रिसोर्सेस में थी। मेन जावा में भी आपने बताया, टारगेट का भी यूज बताया, राइट? तो जार बनाना है या वार बनाना है, वो कहाँ लिखना पड़ता है? वो कहीं डिफाइन नहीं करना पड़ता है सर। जब हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज करते हैं तो वहीं पर वो आस्क करता है हमसे कि जार बनाना है कि वार बनाना है, तो मैंने यहाँ पे जार सिलेक्ट किया। पर जार आपने बोला वार? वार भी बनता है सर। यस। वो ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर में बना, बट अब वहां से प्रोजेक्ट तो अपन अपने इक्लिप्स में लेके आते हैं। यस। फिर ये जार और वार आपने वहां सिलेक्ट किया, तो वो इधर कैसे आ गया इक्लिप्स में? आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझा। जैसे आपने डिपेंडेंसी डाली डेव टूल्स की, कहाँ पे डाली? स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर। उसको प्रोजेक्ट को उठाया और अपने इक्लिप्स में डाला, तो डिपेंडेंसी कहाँ आ गई? इक्लिप्स में। इक्लिप्स में मतलब कौन सी फाइल में? com.xml। परफेक्ट। उसी प्रकार जार और वार आपने सिलेक्ट किया, वो भी किसी फाइल में आ गया होगा, तो कौन सी फाइल है? समझ में आया क्वेश्चन मेरा? रिपोजिटरी में सर। रिपोजिटरी कोई फाइल ही नहीं होती है। मैवन का अपना रिपोजिटरी होता है यहाँ, बट तो com.xml हर चीज, वो जो स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो है, सब लोग भी याद रखिए। इंटरव्यू थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट आप एंजॉय भी कर रहे होंगे इस चीज को। बंदा आंसर देते जा रहा है तो इंटरव्यूअर को बहुत मजा भी आता है आंसर पूछने में, क्वेश्चन पूछने में। इंटरव्यूअर का मन भी करता है कि हर चीज में गाइड किया जाए, बिकॉज आगे वाला बंदा सही है, आंसर दे रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग भी समझिए, जो लोग सुन रहे हैं, जितना पढ़ोगे उतने आंसर दे पाओगे, और जितना आंसर दोगे उतना इंटरव्यूअर भी आप में इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो गेट बैक टू यू बोलने में समय नहीं लगता है। सो बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए। ये जो इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, इसे पता नहीं क्यों हम कोर जावा में इंटरव्यू लेना स्टार्ट किए थे, बट बाद में प्रोजेक्ट में घुस गए, तो प्रोजेक्ट में इतना सारा मिल रहा है माल मटेरियल कि वो खाते खाते नहीं खत्म हो रहा है। सो रोहन, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये था, क्या था क्वेश्चन? जो जार फाइल है वो कहाँ पे होती है? तो जो भी स्प्रिंग इनिशियलाइजर में होता है ना, वो सारा का सारा कहाँ आता है? com.xml। याद रहेगा? यस सर। जैसे आप कोई वर्जन सिलेक्ट करते हो, वहां पे वर्जन भी कौन सी फाइल में आ जाता है? com.xml में आती है। वहाँ ग्रुप आर्टिफैक्ट आप लिखते हो, राइट? वो भी कहाँ आ जाता है? com.xml। ग्रुप और आर्टिफैक्ट में क्या डिफरेंस है? ग्रुप आईडी, मान लीजिए एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं तो सबका एक ग्रुप हो जाता है, और आर्टिफैक्ट आईडी मतलब पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, वो आर्टिफैक्ट आईडी में हम लोग लिखते हैं। जैसे हमने पढ़ते टाइम हमें बताया गया था, जो कंपनीज काम करती हैं ग्रुप आईडीज पे काम करती हैं बहुत सारी, तो आपको एक ग्रुप आईडी दिया जाएगा और उसके अंदर आप आर्टिफैक्ट पे काम करोगे। तो इस तरह से काम। आप बोल रहे थे पढ़ाया गया, तो सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर, समझ में आता है। अभी नहीं, बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं, और मैंने आपको पूछा भी कि बिहार तक कैसे पहुंचे तो आपका गाइडेंस हमें जरूर लगेगा। आप लोग पढ़ाई बहुत करते हो, मतलब एक कल्चर होता है हर जगह का। यहाँ पे भी पढ़ाई करते हैं, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, पर आपके वहाँ पे और अच्छा पढ़ाई होता है। तो बंदे को अगर रास्ता मिल जाए तो छोड़ते नहीं, मेहनती लोग होते हैं, और आप भी उसमें से एक लग रहे हो मुझे। बिहार तो बिहार है, ठीक है, नहीं मेहनत करते हैं, और क्या। आप भी इसी प्रकार पढ़ाई करते रहो। जो यूपीएससी एमपीएससी के लिए जो पढ़ाई करते हो, तो आपने देखी होंगी बिहार में तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें से 10% भी आपने कर लिया ना, यहाँ बहुत ही ईजी है क्रैक करना। ये सबसे सिंपलेस्ट फील्ड है, करेक्ट। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, और उसमें अगर आप पढ़ाई करने लग गए तो आपका माहौल ही माहौल है, समझे ना? तो आर्टिफैक्ट क्या है बोले आप?
आर्टिकल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है। करेक्ट। वर्जन क्या है? वर्जन्स में मतलब हमें हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ हमेशा जब डिप्लॉय हो जाने के बाद में मेंटेनेंस का काम होता है, तो अलग अलग वर्जन्स आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हम लोग यूज कर सकते हैं। आपने गिटहब यूज किया था इसमें? गिटहब पे मैंने सर अपलोड किया, सिर्फ यूज नहीं किया। ये प्रोजेक्ट यस। तो गिटहब पे अपलोड कैसे किया? गिटहब पे सबसे पहले तो हम लोग रिपोजिटरी बनाएंगे गिटहब अकाउंट पे हम लोग का, और उस यूआई से बनाएंगे? हाँ, वहां से बना सकते हैं, या फिर जो गिटहब कमांड प्रॉम्प्ट से बना सकते कमांड हैं? प्रॉम्प्ट क्या से। कमांड है वो? मैंने सर यूआई से ही बनाया था, ओके तो ठीक वहाँ है। रिपोजिटरी बनाया, हाँ। और यहाँ पे गिट इनिट एक कमांड होता है, उसको कहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से? गिट कमांड, बैश? हाँ गिट बैश से हम पहले तो अपने प्रोजेक्ट के इसमें जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे जो यूआरएल होता है फाइल एक्सप्लोरर का, वहाँ पे सीएमडी टाइप करके एंटर मारेंगे तो वो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। वहाँ से हम लोग टाइप करेंगे गिट इनिट, तो गिट इनिशियलाइज हो जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग जो गिट जो भी प्रोजेक्ट है उसका गिट ऐड से सारे फोल्डर्स और जितने फाइल्स है सबको ऐड करेंगे डॉट से। डॉट से होता है कि सारे फोल्डर्स आ जाते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को अपलोड करना है तो उस फोल्डर का या फाइल का नाम लिखेंगे, वही फाइल अपलोड होगा गिट पे। और ऐड करने का कमिट करते हैं और पुश करते हैं, जो भी हमारा यूआरएल होगा रिपोजिटरी का उसको पेस्ट करना होता है, और उसको फिर पुश करते हैं गिटहब पे। तो वो तो पुश हो गया, बाद में चेंज किया तो फिर से पुश करोगे? चेंज तो मैंने सर किया नहीं अभी तक, तो आइडिया नहीं। नहीं नहीं, आपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस तो कर ही रहे होंगे ना, एक आध फाइल में चेंज कर दिया हाँ। आपने, तो फिर से पुश करोगे क्या गिट पे? नहीं, पुश नहीं करेंगे, उस टाइम ऐड करेंगे, ऐड करके कमिट कर देंगे, हो जाएगा। ओके ओके। और ये गिट रिपोजिटरी अगर आपको मेरे को देनी है तो क्या करोगे? गिट का जो रिपोजिटरी का लिंक होगा वो आपको सेंड कर दूंगा, तो आप फिर मैं क्या करूंगा? वो आपको पूरा प्रोजेक्ट मेरा खुल जाएगा, आपको पूरा फोल्डर का मेरा स्ट्रक्चर इक्लिप्स खुला अभी, आपकी लिंक वो यूआरएल भी मेरे पास आ गई, देन तो हाउ आप आई विल बी you प्रोसीडिंग विद need योर to प्रोजेक्ट? clone that I need to particular clone. yes sir, from the git bash only you need to clone that particular repository. I don't have git bash then. You can use the command prompt also, or I don't have command prompt then. you can directly download the zip file of that particular git I repository. don't want to download then. I don't know sir. Okay, so I can use Eclipse, I can use Visual Studio. There are a lot of plugins. Okay, वहां से भी हम कर सकेंगे, राइट? तो क्लोन कर लिया, राइट? तो क्लोन करके चल जाएगा। क्लोन करके फिर आपको उसको एक्सेस करने के लिए अपना Eclipse में उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें एक डॉट गिट करके फाइल बनेगी कोई? यस सर, डॉट गिट नाम की फाइल बनती है। उसको कैसे डिलीट कर दूंगा? मेरे इसमें से डिलीट करनी है तो नहीं पता। ओके, डॉट M2 फोल्डर क्या होता है? डॉट सर डॉट M2 M2 मेवन का कोई ये जो डिपेंडेंसीज आप डाउनलोड कर रहे हो pom.xml से, वो कहाँ जाके स्टोर होती है अपने लैपटॉप में? जो एक डिपेंडेंसीज अलग एक फोल्डर टाइप होता है, उसी के अंदर सारे डिपेंडेंसीज होते हैं। ओके, वो लोकल रिपोजिटरी हो जाती है। लोकल रिपोजिटरी, यस। तो ये सारी चीजें यूज होती है। एओपी यूज किया क्या प्रोजेक्ट? एओपी क्या है? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ओके, तो आपने स्प्रिंग एमवीसी यूज किया, आईओसी यूज किया। या आईओसी क्या है? ऑटो वायरिंग मतलब ही आईओसी है, राइट? हाउ यू विल डिफाइन इट? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है वो। इसमें हमें मतलब जो भी ऑटो वायर एनोटेशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो कंट्रोल जो है हम लोग एक तरह से स्प्रिंग को दे रहे हैं कि जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हैंडल करेगा। तो इन्वर्जन कंट्रोल हुआ, हमारे पास वो कंट्रोल नहीं है, हमने स्प्रिंग को ही दे दिया कंट्रोल। वो इस तरह से काम कर रहा है। स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है? कंटेनर सारे जो कंपोनेंट्स है उसको स्कैन करके उसका ऑब्जेक्ट्स बनाता है, इनिशियलाइज करता है उनको। कंपोनेंट स्कैन मतलब क्या है? कंपोनेंट स्कैन मतलब जितने भी हमारे क्लासेस है उसको स्कैन करके उनका बीन्स बनाने के लिए। जैसे हम जब एंटिटी बनाते हैं तो उस एंटिटी तक पहुंचने के लिए हम जो हमारा मेन क्लास है वहाँ पर एक कंपोनेंट स्कैन नाम का एनोटेशन यूज करते हैं, और वहाँ पे उस एंटिटी नाम का जो पैकेज उसका मतलब पाथ देते हैं com डॉट। तो आपने बोला एनोटेशन यूज करते, नहीं किया तो नहीं होता है क्या? वो वहाँ एंटिटी तक पहुंच नहीं पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा कि पहुंच पाएगा? क्योंकि सर ये एरर मुझे आया भी था, क्योंकि जब मैंने वो नहीं यूज किया था तो एरर आया था कि द एंटिटीज कैनॉट बी इज नॉट फाउंड। तो ऐसा है, कंपोनेंट स्कैन वो अगर आप जो मेन क्लास है वो रूट फोल्डर में रखोगे, यस, तो नीचे का सारा स्कैन कर लेता है, आप समझे? बट आप आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे किधर और कुछ बना दोगे, हाँ, बाहर डायरेक्टली हो जाएगा, तो आपको कंपोनेंट स्कैन यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो कंपोनेंट स्कैन यूज किया था? यस सर, कंपोनेंट स्कैन यूज किया। ओके, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है कि जब आपका मेन क्लास जो था, मेन क्लास में और कुछ लिखा था आपने? मेन क्लास में नहीं सर, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिखा।
ऐड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज किया है? हाँ, उसमें यूज़ किया था किस लिए था वो? वो जितने भी हमारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे एक्सएमएल फाइल का कॉन्फ़िगरेशन या फिर एप्लीकेशन डॉट तो इस कॉम प्रोजेक्ट में आपने किया था वो? हाँ, इसमें किया था कॉन्फ़िगरेशन। वो हमें यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि हमने @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वाला एनोटेशन यूज़ किया था, तो ऑटोमेटिकली उसने इंटरनली यूज़ कर लिया उसको, तो जरूरत ही नहीं पड़ा। ज़रूरत नहीं पड़ा। ओके, कोई ट्रांजैक्शंस यूज की इसमें? ये सर ट्रांज़ैक्शन हमें जब हम डीएमएल कमांड्स यूज़ कर रहे थे, जैसे अपडेट और डिलीट और सेव, तो वहाँ पे हम ट्रांज़ैक्शंस बना रहे थे सेशन के बाद और उस ट्रांज़ैक्शन को कमिट कर रहे थे, तभी ऐड ट्रांजैक्शन एनोटेशन यूज नहीं किया मतलब आपने? ऐड डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन नहीं ओके, आज यूज करके देखो वो भी क्या होता है, आपको समझ में आएगा। आपने बोला डीएमएल वर्ड यूज किया, राइट? तो आप ही के आंसर से मैं आप ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डीएमएल सिलेक्ट क्वेरी जो है वो डीएमएल है कि नहीं है? नहीं, डीएमएल नहीं है सर, वो क्यों? डीडीएल है। क्यों? सॉरी, इट इज़ डीसीएल कमांड, डीक्यूएल। डीक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। कुछ भी बोल दो, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? क्या होता है ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चल जाते हैं क्योंकि बंदा जो कंपनीज को चाहिए वो काम किया हुआ चाहिए, है ना? तो डीएमएल को डीएमएल क्यों बोलते हैं? उसका फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हमें डेटाबेस में कुछ भी मैनिपुलेट करना है या फिर चेंज करना है या सेव ही करना है, तो उस तरह के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो डीएमएल में आते हैं, जैसे इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, ये सारे डीएमएल कमांड्स। ओके, ग्रेट। सो रोहन, आई एम वेरी हैप्पी एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे, अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर फीडबैक की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अभी थोड़ा सा और लेटेस्ट पे काम करके देखो, एंगुलर से भी इतनी आर&डी कर लो तो सब कुछ आपके आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली प्रूव, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़िए, बट नॉट वेरी मच नीडेड। आई वुड डायरेक्टली से लाइक कि अगर आपने काम किया हुआ है तो कंपनी को आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यू आर एक्सलेंट एक्चुअली। जो भी मैंने बहुत खींचने का ट्राई किया, आपको बहुत डेप्थ में पूछने का ट्राई किया, पूरे कोने कोने से मैंने क्वेश्चंस पूछे, एक 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 छोटी छोटी चीज भी पूछी मैंने। आपने देखा, ऑब्जर्व करोगे, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने नहीं कुछ तो 50-100 तो क्वेश्चन पूछ ही लिए होंगे, 50 तो क्वेश्चन पूछे होंगे। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। तो बाकी लोग देखिए, एक प्रोजेक्ट में कितना सारा पूछा जा सकता है। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेंडिंग ही है, और ये बहुत बड़ा समझ आएगा। हम रोहन से फिर से मिलेंगे, वो फिर से और एक्सप्लोर करके आएंगे, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को पढ़ के आएंगे, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। वो जो नए प्रोजेक्ट में और जो स्टैटिस्टिक इनसाइट्स रिपोर्ट्स डालना चाहते हैं तो वो डाल पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि काम कर रहे हैं उन्होंने। उसके लिए जिंक कुछ बोला आपने, क्यूआर कोड के लिए आपने जिंक यूज किया। क्यूआर कोड स्कैनिंग। तो गाइस, ये इनोवेटिव चीजें भी आपको ट्राई करनी होगी अगर आपको कंपनी में जाना है। केवल चैट जीपीटी से काम नहीं चलेगा। चैट जीपीटी इज जस्ट फॉर हेल्पिंग यू। आपका हैंड मत बनाइए उसको पूरा, मतलब थोड़ा बहुत उसको उंगली बना लो, पर आप पूरे हाथ ही चैट जीपीटी को बना लोगे तो आपके हाथ कोई काम के नहीं रहेंगे। इसी के साथ रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतने दिनों में, अभी 3-4 महीने में, बिहार के किसी लड़के का नहीं लिया। बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग, इनके मैंने इंटरव्यूज लिए थे, और आप वहां से क्लास कर रहे थे, मतलब मुझे एक बहुत अच्छा भी लगा। ऐसा नहीं आप ही हो, बट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में समझ में आता है सब? हाँ सर, समझ में सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डाउट क्लियरिंग सपोर्ट सेशन का भी फायदा हुआ? हाँ सर, जो भी मतलब कुछ कुछ एरर्स आते थे कोर जावा में, एडवांस जावा, तो मैं तो सपोर्ट तुरंत जाओ और पूछ लो, राइट? तो मजेदार था, राइट? एनीवे, एक्सपीरियंस अच्छा था? यस सर, डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो चलिए रोहन, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू। या थैंक आई यू, होप थैंक द यू। सेम गोes for you. या नो प्रॉब्लम, थैंक यू।